Good evening, all. On behalf of Federation of Family Physicians Association of India, I welcome you all across India to this webinar today on the eve of World Family Doctors Day. As we all know, the World Family Doctors Day is celebrated to uh, say thank you to the family doctors as well as to make the society aware about importance of family doctors. And this is celebrated across the world. And being an FFPI, one of the largest organization of allopathic family physicians in the country, more than 10,000 members, we take this proud and privilege to welcome you all to this informative webinar. Today, we will be discussing some of the interesting topic. I will not go into the details, but in the upcoming 45 minutes to 1 hour, I am very sure whomsoever is attending this program will be definitely be enriched with good amount of knowledge and that which you can absolutely share. So do not keep this knowledge to you. Make sure once you watch it, you share it with your friends and family members. Now, today, to moderate this session, we have got a veteran family physician, I must say a sports person who has got number of medals in his kitty. Dr. Jayendra Kapadia, sir, from Surat is joining us. Welcome, sir. So, Dr. Jayendra Kapadia is the past president of Federation of Family Physician Association of India, past president of FPS Surat, and the list is pretty long. So you will, whenever we move forward to the program, I think his word speaks more than what I introduce him. But I will definitely add one more point here. He is a veteran. He is a seasoned table tennis player, and he has got a habit of winning practically all the tournaments in which he is participating. And one more passion, he is one of the founder of an initiative called Buzurgo Ka Hum Safar, the a flagship program of FFPI and FPS Surat for meeting and communicating and taking care of various issues related to senior citizens since years together. So, welcome, Dr. Kapadia, sir. The floor is all yours now, and he will introduce the other speakers and conduct the further program. Dr. Kapadia, sir, all yours. Thank you. Thank you, Dr. Pragnesh, for a brief but very important introduction. As Dr. Pragnesh said, today is a day to celebrate the Family Doctors Day. And the theme of the today's webinar, we have kept a very important family physician is lifeline of healthcare. It is very well said that today it is a global occasion to recognize the crucial role of family physician or a family doctors play in healthcare system around the world. और आज पूरी दुनिया में और खास करके भारत में जब हम फैमिली डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे जैसे डॉक्टर प्रज्ञेश ने बताया कि फेडरेशन ऑफ फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरेशन विच टेक केयर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे कई सारे यूनिट्स पूरे भारतवर्ष में एक्टिव है जो फैमिली डॉक्टर के साथ साथ कुछ सोशल प्रोग्राम्स भी करते हैं, खुद के निरंतर सीएबी प्रोग्राम भी करते हैं, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी है। और आज का ये प्रोग्राम हमने इस तरह से आपके समक्ष हम लोग पेश करने जा रहे हैं कि जिसे आपको जो एविडेंस बेस्ड, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं, हमारा साइंस जो बोलता है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ जो भी बात हम आपसे करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फॉर ऑलमोस्ट 1 hour वी आर गोइंग टू हैव एन एक्सेलेंट कम्युनिकेशन विथ वेरी लर्नेड and very experienced family physician across India. We have doctors from Indore, we have doctors from Bangalore, we have doctors from Mumbai, we have doctors from Ahmedabad, we have doctors from Surat. So we have a very learned family physician across the country. And myself, Dr. Jayendra Kapadia, we are going to start this webinar today with a said once again that family physician is a lifeline of health system. So first of all, I would like to invite Dr. Subramanyam. Dr. Subramanyam, he is a past president of Family Physician Association Bangalore. Let me admit very honestly that we have few very active units across India, and Bangalore is one of the very active unit which caters different activities, not only for family doctors, for their families, but importantly, they organize yearly conference, they organize the federation conference, continuing medical education program, workshops,
So every month they cater one kind of activity by the Family Physician Association Bangalore. And I'm very happy to introduce Dr. Subramanyam, very senior family physician. He started his practice in 1978. So he has a family practice experience of, you can say, more than 47 years. So, Dr. Subramanyam, let us begin with our discussion today that there are so many myths amongst the society. There are so many misconceptions in the society. Myths और misconception, जिसे आप बोल सकते हैं कि people सोचते कुछ है और हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी बात लेके आया जिससे कोई बेस नहीं होता है, जिसका कोई तर्क नहीं होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द कॉमन मीथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन जनरल जो हमारे पास पेशेंट और उनके रिलेटिव्स लेके आते हैं, वो व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शन एंड हाउ वी शुड डील विद इट, डॉक्टर सुब्रमण्यम। Thank you, sir. Thank you for your kind introduction. Good evening, everybody, everyone who has joined the meeting. Well, the myths and misconceptions have been part is going on through centuries in our, I think, everywhere in the world, and more so in our country. And again, it's because people are not sure from where they get clarification for myths and misconceptions, and they are confused a lot with the traditional beliefs carried on through generations, through the media, social media, and more so in our WhatsApp University and Google, all these things. They are not sure. So, what is the solution? Probably they should know to a person who they good rapport, and the person know him very well over a long period and is open to discussion and clarification. Who else it can be? It is family physician. He is the only person who can address these clarify these myths and misconceptions of common man. Well, to give a few examples, see, first of all, day in day out we face this problem. People are confused about system of medicine. There are various systems of medicine like Ayurveda, homeopathy, and various other things. We allopathic doctors are not against any other system, but we say ours is documented science where everything, whatever we prescribe is documented, studied, and every benefit, side effects are documented. Whereas people think these alternative medicines are natural and they don't have side effects, whereas our allopathy medicines are chemical and they have side effects. And it's our duty, responsibility as family physician to make them understand rather than turn down. You don't know, you take this, we know. No, we make them understand. I simple way I explain them. See, that is those days there was no laboratories, no tests. They were just knowing there is something in something. But what science did, that something and something they took out, analyzed, standardized, and give. So how can it become chemical? So it is, that is how I try to convince my people. And a lot of myths. Another common problem we face is uh, food, regarding food. Like traditionally, they believe carried on is fasting, feasting. They thought, our elders thought it is good for health. So I make them understand both may not be beneficial. Fasting or feasting has their own benefits and demerits, but eating right thing at the right time in the right proportion is the correct way. There's no need to do fasting and feasting. Even often we come across people, they think, believe that ghee is very good for health. I make them understand that ghee is good in moderation, not in excess. There are a lot of people they believe it's good for health. Yes, anything in limitation is good for health. Similarly, we come across people, some they say some food causes cold, some food causes heat. It's all carried on through
our grandparents, great grandparents have told that don't eat this, don't eat that, it causes cold, causes heat. So we as family physicians should make them understand that it's not exactly true, that all foods are good as long as it's taken in moderation. Again, now I come across most of the people are deficient in protein. When I recommend protein, straight away good number of them bounce back. Sir, protein is causes kidney damage. Like that kind of belief, it is carried on through social media and things like that. Then I have to make them understand, yes, if taken in excess, like in those fitness freaks, they take too much and that may cause damage. As if you should go by recommendation by doctors, you consult your family doctor, he will advise how much to take, which authentic brand to take, then you will not have any problem. Anything you take other than water in excess is harmful. Your food itself is more harmful than any medicine if it is taken in excess. That is how I try to make them understand. Another common myth I come across nowadays is vegan diet and various other kinds of diet. People are confused. I don't think, as professionals and educated doctors, we don't recommend any of these kind of diets to public. We always give the balanced diet and tailor-made diet for a given individual. So in the pretext of vegan diet, many people have stopped taking milk. So I tell them, see, whole world grows with milk. Whole milk is complete food. Child till it stands up and takes oral feeding, it is grows on milk alone. So there is no need to carry, and such people spread such message, and because it's growing big and big. Somehow I wonder the social media is stronger than any professional body. It is here, I think, we people as family physicians play a very big role in clarifying these myths. Other again, this Google knowledge. People go through Google, they get confused, and they come to us with a diagnosis, treatment, almost everything. So it's our duty to clarify all these things, and we as family physicians have a big role to play. Another Thank you. common myth I come across is investigations. They say they keep getting WhatsApp messages and they go for investigations. And some people I have seen, they make big list of deviations and they come to. Then I ask them, "What's your problem, sir? I went for blood checkup. There's so many problems in my blood. See that? See, mister, what is your problem?" He said, "I have no problem." Then what is this? Point one deviation, it shows a highlight and they get confused and they get frightened. These are the myths going around in the public. And regarding antibiotics, when we prescribe antibiotic, they ask, "Sir, is it going to cause side effect?" Yes, one of the every drug has some side effect, and if it is when beneficial effects outscores side effect, then only it is recommended for human consumption. Don't worry. And many people on their own take antibiotic irrationally, without They don't take the consult. proper dosage also. Yes, they just like they pop up one or two doses, three doses, soon they feel They do better. not complete the course, and the moment they feel little better. Yes. Yes, So Dr. Subramanyam, you have very well taken out the myths and misconception prevailing amongst the society. But very importantly, you said two things about that we as a family physician, we talk always about the evidence based. और दूसरी दो बात जो आपने कही वेगन डाइट, ये कुछ बातें काफी जरूरी है जो हर एक के लिए अगर थोड़ी सी उस समझ से अगर बात करें तो उसमें काफी कुछ बेनिफिट हो सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर सुब्रमण्यम. नाउ वी हैव अनदर जेंटलमैन फ्रॉम इंदौर. regarding mental health, sir. Yeah, we'll take it later on. Part Okay, sir. two, we will take mental health, Okay, thank right? you, sir. Thank you, Uh, sir. so now we have another very experienced and a very senior family physician from Indore, Dr. Manish Jain. Manish, good evening and welcome Good to the evening, sir. webinar. Dr. Good evening, Manish sir. is a past president of General Practitioner Association Indore. As I said earlier, जैसे बेंगलोर कार्यरत है अच्छी तरह से, उसी तरह से इंदौर में भी काफी कुछ निरंतर सीएमई प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं. इंदौर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की है
और जब तक मैं जानता हूँ डॉक्टर मनीष उस टाइम पे साइंटिफिक कमिटी चेयरमैन भी थे. इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंदौर and very much academically sound. The way he practices is going through ethics and academics. That is the plus point of Dr. Manish Jain. Manish, एक बात किसी ने बहुत अच्छी करी है. किसी ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ True, इज वेल्थ. true, sir. और दूसरी बात एक कहीं भी कहीं सुनी है मैंने कि आजकल एक स्वस्थ व्यक्ति हर एक कार्य करने में समर्थ होता है. अगर person is healthy, he can do any good things in life. So once again, the nucleus come to the health. तो एक बात आज हम रोज रोज सुनते हैं और पढ़ते भी है कि लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करो. तो लाइफस्टाइल डिजीज मतलब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या है और ये कैसे होती है और इसे कैसे रोका जाए. My question is very simple, but the answer is going to be little very academic and ethical. So Yes, Manish, sir. what are the lifestyle disease? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या है और इसे कैसे रोकथाम की जाए? Sir, first of all, thank you for your kind introduction, Dr. Kapadia, sir. जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम. जैसे कि सर ने बोला कि लाइफस्टाइल डिजीजेस आज से 25-30 साल पहले यदि आपने देखा हो, जो डिजीज का पैटर्न था वो बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न था. तब उस जमाने में आपको टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड इस टाइप की बीमारियां हुआ करती थी, जिसको अपन संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं. As our country, as we progressed, gradually the disease pattern has started to evolve. The disease pattern has started to change. And the change is because of the lifestyle which we have adopted. This is what we call कि हम लोग वेस्ट की तरफ से कई चीज़ों को अपन ने अडॉप्ट करा है. वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर लाइफस्टाइल. सो जितनी भी बीमारियां जो कि आपके लाइफस्टाइल का मतलब आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपका आचरण, स्ट्रेस का लेवल, मेंटल लेवल, इन बीमारियों के कारण, इन चीज़ों के कारण से जो बीमारियां होती है उसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं. इस टाइप की बीमारियां आपको ताज्जुब होगा, जो किसी जमाने में बहुत कम मात्रा में रहती थी, they have surpassed the incidence of all the communicable diseases except barring COVID, but rest all the other diseases have been surpassed because of this lifestyle diseases. आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन करना इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसा कि ये इसका नाम है लाइफस्टाइल डिजीजेस, दीज आर ऑल प्रिवेंटेबल डिजीजेस. मुख्यतः मेन जो डिजीजेस हैं मैं उनके बारे में जस्ट इन्यूमरेट करता हूँ. लाइफस्टाइल डिजीजेस में सबसे ऊपर आती है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओबेसिटी, मोटापा. देन यू हैव रेस्पिरेटरी, वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की बीमारी, दमे की बीमारी. Then you have some sort of cancers which are associated with this lifestyle diseases. And the most important is the mental health. अपन शरीर के बाकी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, परंतु मेंटल हेल्थ, दिमाग की हालत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं. And as my learned colleague, Dr. Subramanyam is going to talk about mental health, I'll restrict my talk to the other diseases. जैसे कि अपन ने मुख्य बीमारियां के बारे में बात करी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, देन स्ट्रोक मतलब लकवा या हार्ट का प्रॉब्लम. इनके जो मेन रीजंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने अभी बताया कि द मिथ्स, अपने समाज में खाने से संबंधित इतने मिथ्स और इतने वे कंसेप्शंस हैं सबको, जो कि जिसके कारण से ग्रेजुअली धीरे धीरे ओबेसिटी इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम. किसी जमाने में कहते थे कि किसी की तोंद निकली हुई है तो अच्छा, अच्छे खाते पीते घर का व्यक्ति है. नाउ दोज आर ओल्ड कंसेप्ट्स. अच्छे खाते पीते घर का व्यक्ति यदि तोंद निकली हुई है, सो ही इज नॉट अ हेल्दी पर्सन. A healthy person is
someone who is not only free from disease, but he is fit in all other sense. एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बीमारी को मैं इन्यूमरेट करूंगा और उसके क्या रीजंस हैं लाइफस्टाइल के, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, सी हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज दोनों देखा जाए तो हेरिडिटरी बीमारियां हैं, फैमिलियल है। यदि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो ग्रेजुअली आपको भी होएगा, परंतु we can try to avoid it or we can try to prevent it with the help of the lifestyle modifications. ये हम लोग को समझना चाहिए, आम जनता को इस बात को रियलाइज करना चाहिए। दीज आर हाइपरटेंशन होना आपको कोई नहीं रोक सकता, नो डॉक्टर कैन स्टॉप इट। if a father is a hypertensive or if he's a heart patient, you are likely to suffer from this disease. बट यदि आपने आपके खान पीन में, आपके आचरण में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करे तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ओबेसिटी की यदि अपन बात करें, मोटापा, अक्सर अपन लोग बोलते हैं कि इसका वजन इतना है, इसका वजन इतना है। नोबडी टॉक्स अबाउट बीएमआई। व्हाट्स अ बीएमआई? एवरीबडी शुड नो व्हाट इज अ बीएमआई। बीएमआई इज बेसल मास इंडेक्स। दैट मीन्स आपका जो मास इंडेक्स है that should be within the permissible limit. And what is the permissible limit? Normally 18 to 22 23 तक होना चाहिए, 25 तक भी है तो ठीक है। Anything which goes about 25, that means आप मोटे हो। So forget about those things। जैसे सर ने बोला health is wealth and all, तो आपकी टोन से wealth नहीं दिखती है, आपकी health से आपकी wealth दिखती है। So remember that BMI index should be below 25। मोटापा आई थिंक डाइट के ऊपर भी शायद अपन आगे बात करेंगे, बट डाइट एक इतना खराब टैबू है इन टुडेज जनरेशन दैट वी टेंड टू ईट व्हाट नॉट। जो अच्छी चीजें हैं वो खाते नहीं हैं, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स। एंड सर ने जैसा अभी बताया कि है ना, प्रोटीन के इंटेक के बारे में लोग बाग को मिसकंसेप्ट्स है, मिल्क के बारे में मिसकंसेप्ट्स है। सो यू डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉपर डाइट। So first and foremost, you should know what is your diet. So obesity का सबसे मुख्य कारण है diet. Second is lack of exercise. Exercise helps you in so many ways. Exercise not only it reduces your obesity, keeps your body fit, it improves your mental health. Secondly, it normalizes your blood pressure. आप यदि देखेंगे, यदि अपन डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज में यदि आपका वजन 10 to 15 kilograms कम हो जाता है, इफ यू आर ओवरवेट, राइट, नॉट लीन पीपल, बट इफ यू आर ओवरवेट, just by reducing 10 to 15 kilograms of your weight, you can reduce your HbA1c level. HbA1c level is basically a indicator for the level of diabetes, right? So you can reduce your HbA1c level to significant 1 to 1.5 units तक नीचे आ जाता है just by reducing your weight. So weight is a very primary important factor which is responsible for this lifestyle diseases. Hypertension की बात करें, everybody in today's world is having a type A personality. Stress, ऑफिस का टेंशन, परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। मैं हमेशा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ लोग बाग को कि जब भी आप अपने घर जाएं तो जितने भी स्ट्रेसेस हैं वो स्ट्रेसेस को अपने घर के दरवाजे के बाहर टांग के आ जाए। Don't take your stresses back home. And if your lifestyle or if your working environment is such where you have lot of stresses, तो आपके पास में उस स्ट्रेस को कम करने का भी एक उपाय होना चाहिए, आपके पास में वो माध्यम होना चाहिए जिससे कि आप आपके स्ट्रेसेस को कम कर सको। If you are leading a high profile life, definitely you will have stresses in your life. But on the same level, you should know how to reduce stresses by the means of yoga, you're doing meditation, या किसी भी प्रकार की कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी यदि आप करते हैं तो भी आप आपके स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर द प्राइमरी कॉज इज type A personality, then your eating habits, then your stress levels. So these are one few examples of lifestyle diseases for hypertension. Similarly, for
कार्डियक इवेंट्स। कार्डियक इवेंट्स में भी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। योर डाइट, योर ब्लड प्रेशर, सॉरी, योर स्ट्रेस लेवल्स एंड योर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी पे भी अगेन अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं। Then comes your respiratory diseases. Respiratory diseases, to some extent, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लाइक दिल्ली का अभी अपन देखें, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल इज सो हाई, या किसी भी मेट्रो की बात करेंगे तो पोल्यूशन लेवल इज सो हाई, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। बट आप जिस जगह पे कर रहे हैं, यू कैन हैव फैसिलिटीज, यू कैन हैव वेज वेयर यू कैन रिड्यूस योर pollutant levels, or you can wear a mask. I still, after COVID, it's almost 5 years, I still wear a mask when I'm in my clinic or I'm going to a crowded place. This way I can avoid so many things. Respiratory diseases में आजकल बहुत बड़ा चलन हो गया ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के अलावा आपका चलन हो गया है ऑफ ईटिंग पान गुटखा। आपको टीवी पे जब अपन ऐड देखते हैं, हर दूसरा ऐड, हर तीसरा ऐड आपको पान मसाले का या गुटखे का, फैशन जैसा हो गया है कि पान मसाला खाना या गुटखा खाना। दैट इज सो हार्मफुल। वी एज फैमिली फिजिशियंस शुड बी एबल टू कन्विंस आवर पेशेंट्स दैट दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर यू, दिस थिंग्स आर बैड फॉर यू। इन सब चीज़ों से बचो आप। सिमिलरली कैंसर्स, जो आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, जो ईटिंग हैबिट्स हो गई है, यदि आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का जो चलन चालू हुआ है, आपने कभी पलट के कभी देखा नहीं है कि जब भी कोई आप चीज खरीदते हैं या कोई फूड आइटम खरीदते हैं, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए? नोबडी रीड्स दैट। नोबडी रीड्स व्हाट आर द कैलोरीज इनसाइड, बट यू लाइक इट टेस्टी। फ्रेंच फ्राइज क्या टेस्टी लगती है। ऑल बच्चा दे लव फ्रेंच फ्राइज। सबको कैंडीज, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, कितना कितना मजा आता है, बट नोबडी नोज व्हाट इज बिहाइंड दैट। एक पेस्ट्री यदि अपन खाते हैं, डू यू नो हाउ मेनी कैलोरीज दे गो इन? सो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये जो कैंड फूड है, this is going to this increases the prevalence or the incidence of cancers in our body. This we should realize. Once in a while कभी सभी ले लिया, that's okay, but आजकल तो फैशन हो गया, घर पे खाना बनता नहीं। I know so many people जिनके घर में शाम को खाना ही नहीं बनता है, उनके घर में हमेशा बाहर से खाना आता है। क्यों? फैशन है। नो, फीमेल्स भी घर पे हम लोग शाम को खाना नहीं बताते, हम तो रिलैक्स करते हैं, वी एंजॉय आवर लाइफ। भाई, इन एंजॉइंग योर लाइफ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। आप ये ध्यान नहीं रख रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। मेंटल हेल्थ, अगेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इज स्ट्रेस। आजकल नोबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज कर Dr. कोई नहीं करता। Subramanyam is going to take up the mental Yes, health. mental health. Sorry. So regarding the other things, so these are the main diseases which are there, and the examples which I have given for the diseases. And I think we'll discuss about the prevention part in the later talk. So I think I'm clear about the lifestyle diseases and the commonest examples because of the lifestyle. Over to you, Dr. Kapadia. थैंक यू मनीष। आपने बहुत बहुत बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिखाया कि भी लाइफस्टाइल डिजीज जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज आपने सही बताई कि स्ट्रेस, और दूसरी चीज जो बताई फिजिकल एक्टिविटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज जो लोगों की आम समझ में आज बहुत कम है, दैट इज बीएमआई। आप अपना बीएमआई जाने और हो सके इतना उसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी आज एक कैंपेन शुरू किया है कि आपके खाने में 10% ऑयल कम करो और ओबेसिटी से बचो। तो मैं समझता हूँ हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री ये बात करते हैं, तो ये बात हमें माननी चाहिए। हमारी जो रेगुलर डाइट है उसे फॉलो करो, फिजिकल एक्टिविटी, और एंड कीप योर सेल्फ, बहुत इतना एक्टिव भी मत रखो कि आप स्ट्रेसफुल हो जाओ, इतना रिलैक्स भी मत हो जाओ कि आप कुछ न कर सको। कीप योर सेल्फ बैलेंस। थैंक यू मनीष फॉर अ वेरी वेल प्रेजेंटेशन। एंड नाउ आई इनवाइट अवर ऑनररी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रग्नेश वसराजानी, very young and dynamic administrator of federation,
Let me tell you that at present, the headquarters of Federation is at Ahmedabad. Previously, it was at Bombay. Now it has shifted to Ahmedabad. And Dr. Pragnesh Vasrajani, a very young and a very able administration. वो सिर्फ he is not only able, he has almost multifaceted personality. In a very young age, he is a very successful family physician, very good administrator. He can manage most of the things very easily. Communication amongst the medical fraternity he's too excellent in everything. So in nutshell, Dr. Pragnesh Vasrajani is a right person at present to be there as the Honorary General Secretary of the Federation of Family Physician Association of India. And he is from Ahmedabad. He is a very active member of Ahmedabad Family Physician Association and has enjoyed several posts at IMA level, Indian Medical Association level, and at the Ahmedabad Family Physician Associate. Pragnesh, welcome to the discussion. And now, see, we are talking about the clinical side, कि misconception क्या है, lifestyle disease. But we would like to know from you, what exactly Federation की जो आज जिम्मेदारी है. It's an organization, as you said, caters more than 10,000 allopathic doctors across the country. So your responsibility is very phenomenal. But let us know from your side that see how do you select a very ideal family doctor कि किसके पास जाए, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि हम कई लोग सिर्फ बोर्ड पढ़ के चले जाते हैं, बट हाउ टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट फैमिली डॉक्टर. एंड मैं समझता हूँ कि फैमिली फेडरेशन हैज स्टार्टेड आइडियल क्लिनिक फॉर दैट. सो विल यू प्लीज गाइड अस रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरेशन इन द present situation and what we expect in future from the federation. Dr. Pragnesh. Thank you, Dr. Kapadia, sir. But let me start with that. Our Pradhan Mantri has said कि oil कम करो, butter कम करो, तो काफी लग गया, sir. So thank you for that nice introduction. See, you raised a very important and pertinent point. हमारे यहाँ आदत है कि लोग सिर उठाते हैं, sorry, सिर नहीं उठाते हैं और क्लिनिक में घुस जाते हैं. They do not bother to read the board that has been kept outside the clinic. See, we are not against any pathy. जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसकी प्रैक्टिस वो करे, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो क्रॉस पैथी होती है, the one person practices other pathy, या in certain areas, forget degree, they do not have any qualification, forget any other pathies. So being a patient, जो भी पेशेंट है सबको सबसे पहले they must ask a simple question to the doctor कि सर आपका डिग्री क्या है. Nobody will, let me tell you, nobody will get offended. It's easy. जब हम कहीं भी जाते हैं तो पिक्चर देखने जाते हैं तो देखते हैं ना स्टारकास्ट कौन है, कौन काम कर रहा है. खाना खाते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें मिलती है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है. हम इतना हर एक छोटी छोटी चीज में ध्यान रखते हैं. तो वाई डू नॉट वी टेक केयर व्हेन वी सिलेक्ट ए फैमिली डॉक्टर. क्योंकि हम लोगों ने फैमिली डॉक्टर से बढ़ के फैमिली फिजिशियन नाम किया, तो उन्होंने फिर जनरल प्रैक्टिशनर से बढ़ा के फिर उनका नाम भी फैमिली फिजिशियन कर दिया. तो ये वी आर नॉट इन रेट रेस विद एनीवन. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू द अर्नेस्ट ऑडियंस इज, whenever you go to a doctor, please make sure that you read the degree certificate which is displayed in most of the clinic outside in the waiting room कि इनका डिग्री क्या है. एंड देयर आर एम्पल एवेन्यूज. मेडिकल काउंसिल का वेबसाइट देखे वेर यू कैन फाइंड योर डॉक्टर कि मैंने लिखा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो ये इन रियल सेंस ये है कि नहीं, आप वेरीफाई मेरा डिग्री कर सकते हैं. अभी तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ये जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया होता है कि ये एलोपैथिक क्लिनिक है. तो हम जो चीज खरीदना चाहते हैं, हम कभी सब्जी लेने के लिए कोई होटल में नहीं जाते, सब्जी लेने हम सब्जी मंडी जाते हैं. तो हमको जो चीज का ट्रीटमेंट लेना है उस ट्रीटमेंट के डॉक्टर या प्रैक्टिसिंग पर्सन के पास हमको जाना चाहिए. So that is very important. And as you rightly said, sir, we are shortly coming up, most probably on the Doctors' Day on 1st of July. We are launching a nationwide campaign to identify allopathic family physicians across India in form of ideal family physician clinics. See, standardization is the rule everywhere, and everyone always wants that my doctor is fully equipped to deal with any emergencies that may come to me or my family, and all the facilities are available at my family doctor's clinic. So we have come out with certain ideas and guidelines by which
We will certify the clinics and the doctors who are practicing in various parts of the country. So we'll make life easy for doctors to for patients to identify uh, the doctors that they are visiting. That is one part. And as you said, I will coming to the second part of your question, the responsibility of federation that we see in the current times. The current times, what we feel is the federation works on the three front. First, we update and upgrade our family physicians in various topics and various innovations and things that are happening around across the world. Second, we do a lot of social activities in the form of, in the beginning, I talked about the initiative called Buzurga Ka Hum Safar. Now we are, in a short span of time, going to launch a nationwide breast cancer awareness program. And third, the most important part we do a lot of programs to educate the society and lead by example. What I mean by lead by example? Yesterday we have got 4 blood donation camps in Ahmedabad on the eve of World Family Doctors Day. So we lead by example. We go and donate blood there and we make society aware about the importance of blood donation. So we do 3 important things: upgradation of members, informing the society about the things, the family doctors and importance of family doctors. Because in the coming times, as Dr. Manish has rightly pointed out, we see that we expect that the 20% out of 100 out of 20 patients coming to our clinic is having some lifestyle disease. And if you want to fight the lifestyle disease effectively, if you want to become 3 trillion economy, if you want to become a developed country in so and so year, family physicians are the most important cornerstone of the healthcare system of India. Thank you, sir. One more thing, Pragnesh, we would like to know from you because quakery. See, आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और हमें हमारे आसपास भी देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड पास और 12th स्टैंडर्ड पास कोई बंदा कहीं दूसरे स्टेट से आता है और ये बड़े बड़े सिटी में कुछ कुछ अपनी भाषा में लिख के प्रैक्टिस शुरू कर देता है। लोग पूछते भी नहीं है कि उसकी डिग्री क्या है, और जो आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है वो क्वेकरी। तो क्वेकरी इज ए वेरी बर्निंग इश्यू फॉर एंटायर मेडिकल फेटर्निटी, कोई भी पथी हो सबके लिए है। तो उसके लिए फेडरेशन ने क्या सरकार के साथ कुछ संकलित प्रोग्राम्स है और आपने उनके साथ कुछ काम करने की फेडरेशन ने साथ दिया है? See, time and again, if you've come across certain persons who are practicing, calling themselves a doctor without any degree, we pass on this information to the concerned authorities, and our agile concerned authorities, government and police department, they obviously take due actions in a due course of time. And recently, there is an example of Surat that a lot many of these bogus practitioners were caught by the Surat police. So we are constantly being vigilant, and with the help of our units across 32 unit spreads across India, we keep a close watch on that. And whenever we come across something, we report it to the authorities. Thank you, Dr. Pragnesh. One more thing we would like to know about you regarding the federation, that अब भारत सरकार और कई और राज्य की तरफ से कई योजना चल रही है, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ब्रह्मा स्वास्थ्य बीमा योजना, और सीनियर सिटीजन मोर देन 70 ईयर्स उनके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, और कई सरकार ने भी माँ कार्ड योजना शुरू करी है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि साहब ये सर्जरी के लिए हमें आयुष्मान भारत योजना में बेनिफिट्स मिलेगा, और सीनियर सिटीजन आके पूछते हैं कि 5 लाख तक की ट्रीटमेंट हमें फ्री मिलती है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि फैमिली फिजिशियंस और द फैमिली प्रैक्टिशनर्स और एनी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस टू व्हेन यू फ्रेम दिस पॉलिसी, because as you know very rightly that the family physician is the first point of contact in any health issue. तो अगर आप हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, जन आरोग्य की बात करते हैं, आरोग्य लक्ष्य स्कीम की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फैमिली डॉक्टर शुड बी इन्वॉल्व एंड इंक्लूडेड इन ऑल दी स्कीम रिगार्डिंग द इन जनरल if you take the cross segment of the entire society, how a federation can help in this respect. Dr. Pragnesh. You are absolutely right, sir, because we all family physicians are sitting at the grassroots level and we know the issues pertaining to the society. So it's an unfortunate part of the story that whenever these policies are being made, whenever these schemes are being introduced, family physicians are absolutely not taken into confidence in any form.
We have time and again written to the government about our collaboration and offering them help in whatever program government wants to decide. And still, we are in the process, and we are, see, as you have pointed about the obesity mission, we have already written a letter to the government of Health Minister, government of Gujarat, that we will be love and very happy to participate in the mission and help the government to design the entire program. So we are absolutely behind that. And you rightly said that being a family physician, we must be aware about all the schemes that are going on. But unfortunately, we are not being taken into the confidence. And for that reason, we are representing to the various health ministers across Gujarat and to the central health ministry also. In due course of time, we are going to meet him also and to keep him apprised about the situation. And then we should be keeping into the loop whenever any new initiatives or any this thing plans are being released for the society. तो वी पर्सनली ऑल विश दैट जब भी आप सरकार से या लॉ मेकर से मिले तो बोलो कि फैमिली फिजिशियन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एज लॉन्ग एज दी हेल्थ इश्यूज आर कंसर्न, और उसे भी हर एक स्कीम के लिए अंदर कुछ इंक्लूड करें. Thank you, Pragnesh, for enlightening us regarding the very different administrative aspect. हम लोग क्लिनिकल बात करते हैं, लेकिन ये सब चीज मेडिक्लेम के बारे में कई डॉक्टर्स को कई कुछ पता ही नहीं होता है. जब पेशेंट पूछते कि मुझे मेडिक्लेम है, लेकिन जब वो सर्जरी कराने या कोई भी प्रोसीजर में जाता है तो उसे मेडिक्लेम नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है. तो फैमिली डॉक्टर शुड ऑल्सो नो व्हाट आर दी मेडिक्लेम स्कीम्स, वेयर ही इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड. और इसके लिए कुछ आप बता सकते हो रिगार्डिंग द मेडिक्लेम, प्रज्ञेश? See, sir, in the different parts of the world, there are systems that whenever you are going to a specialist or getting admitted in a hospital, primary recommendation from a family physician is must. Unfortunately, in India, because of various reasons, this system does not exist. And another important part is OPD insurance. Now, very few players have come up, and now they are offering OPD insurance so they get reimbursed for the treatment they have taken from a family physician. But there is a long way to go. So we are definitely in talks with various insurance companies. We are exploring the companies who are offering this OPD insurance and all to make them to give benefit to the other patients. At the same time, as you said, there are various terminologies, various terms conditions laid by the insurance companies time to time, IRD and all. But as I said, in the other policies which are made by the government, we people are kept out of the loop, and that's why the entire system is taken for a ride, and the claims are mounting like anything. False claims are happening. So if you do not take into the confidence the person who is at the center of the healthcare, who is the pillar of the healthcare, such things are bound to happen. So, and which is obviously not sustainable in future for longer period of time. Thank you, Pragnesh. You have very rightly pointed out that a family physician or a family doctor should always be taken into consider because he is the first point of contact. Thank you for enlightening us regarding some schemes regarding Mediclaim, and very, very, very important that the what you call ideal clinic, which the federation is going to come up in the near future. Now we shall go to another very important topic regarding adult vaccination. एंड फॉर एडल्ट वैक्सीनेशन की जानकारी लिए हमारे साथ एक वेरी वेरी व्हाट यू कॉल वेरी लर्नेड फैमिली फिजिशियन फ्रॉम सूरत. ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन एट प्रेजेंट. ही इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन सूरत. ही इज नन अनदर देन डॉक्टर दीपक तोरावाला. And let me introduce one more aspect of Dr. Deepak, that as Dr. Pragnesh in the initial phase very rightly said, that we have a project called बुजुर्गों का हम सफर. और ये प्रोजेक्ट फेडरेशन ने फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन सूरत की ओर से एडप्ट किया है, एंड विच इज़ गोइंग ऑन अक्रॉस द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. तो ये जो प्रोजेक्ट है कि हाउ टू लीव एंड लीड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट. तो इसके साथ साथ Dr. Deepak Torawala, he is the coordinator at the federation level, and he is the coordinator of the project Buzurgo Ka Hum Safar at the Family Physician Association Surat. Welcome, Dr. Deepak. तो आपसे ये गुजारिश है कि what is adult vaccination? Because we know about the COVID vaccines. Because most of us have taken the COVID vaccine. That is the only adult vaccination in general people know about it. But we would like to know from you what are the different kind of adult vaccination
इससे क्या फायदा है, कब लेना है, क्यों जरूरी है, साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो काइंडली वी इनवाइट यू टू एनलाइटन अवर ऑडियंस रिगार्डिंग द एडल्ट वैक्सीनेशन और टीकाकरण, वयस्क नागरिकों में टीकाकरण की बातें करें। थैंक यू डॉक्टर दीपक, ओवर टू यू। Thank you, sir. Very generous introduction. Uh, सबसे पहले तो मैं थोड़ा इम्यूनिटी, अपना जो बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम है उस पर बात करूंगा कि जनरली वी हैव अ टू टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. वन इज immediate and one is adaptive. Immediate, whatever the reaction when the body comes with any infection, the reaction first come is innate immunity, and then one memory oriented immune response will come, that is adaptive. सी पीडियाट्रिक बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है वो सबको मालूम है, सोसाइटी में वेरी वेल नोन. और अभी तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदली है, गवर्नमेंट भी दे रही है, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. तो एवरीबडी नोज अबाउट द चिल्ड्रन वैक्सीनेशन, उसका भी हम लोग बाद में बात करेंगे. बट देर आर सम सिचुएशन एंड देर आर पीडियाट्रिक चिल्ड्रन में ऐसा क्यों है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इमेच्योर होता है, इसके लिए उनको वैक्सीन देना पड़ता है. तो इन ओल्ड एज और इन लेटर एज वही प्रॉब्लम वापस होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है. तो कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज की वैक्सीन्स है जो एडल्ट में भी, वयस्क में दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड एडल्ट वैक्सीनेशन. अभी वो जरूरी क्यों है? तो ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग छोटे होंगे तो जो जो भी वैक्सीन दिया होगा उसका धीरे धीरे असर अभी कम हो जाता है ओवर एज. एज यू गेट ओल्डर वो वैक्सीन का असर कम हो जाता है. दूसरा पॉसिबिलिटी वो है कि उस टाइम हमने सब वैक्सीन नहीं भी लिया हो. अच्छा, उस टाइम कुछ वैक्सीन ऐसे थे जो अब अवेलेबल नहीं थे, न्यूअर इंट्रोडक्शन हुआ है, न्यूअर डिसीज हुआ है, वो सब अभी नए वैक्सीन आए हैं. और जैसे हमने लाइफस्टाइल डिसीज में डॉक्टर मनीष ने बोला कि जो अपना लाइफस्टाइल, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, रिपीटेड इन्फेक्शन, वो सबसे भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. और उसके लिए जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है और उनकी वैक्सीन अवेलेबल है वो एडल्ट में लेना खूब जरूरी है. अभी गवर्नमेंट ने भी रेकमेंड किया है, सीडीसी ने भी. तो बहुत सारा पूरा लिस्ट है, लेकिन मैं उसमें जो तीन चार एकदम इम्पोर्टेंट है उसका ही डिस्कशन अभी करेंगे. और अ, ये प्लेटफॉर्म से, एफएपीआई के प्लेटफॉर्म से हम लोग वो भी गवर्नमेंट को रेकमेंड करेंगे कि ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी आपको यूनिवर्सल जैसे पीडियाट्रिक में है ऐसा बस करना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए. और अभी तो एक्चुअली मेडिक्लेम में भी ये सब मिलता नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, after age of 55 60, everybody should have one influenza vaccine, that is for influenza virus. हम लोग देखते हैं कि जैसे मानसून शुरू होता है, पूरा एक के बाद फैमिली मेंबर फीवर, कफ, कोल्ड, बॉडी पेन चालू होता है. जनरली वो सब इन्फ्लुएंजा होता है, वायरस से होता है. उसमें कभी कभी समटाइम्स इट बिकम सीवियर, यू हैव टू एडमिट द पेशेंट इवन इन आईसीयू ऑल्सो. सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में जैसे कोविड में अलग अलग वेरिएंट आता है, ऐसे इन्फ्लुएंजा हर साल अलग वेरिएंट आता है. तो हमारा इंडिया के लिए जुलाई अगस्त में नया जो वैक्सीन का वेरिएंट है वो लेना जरूरी है. एवरीबडी शुड हैव आफ्टर 55 और 60 वन शॉट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर ईयर. सेकंड वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया.
ये बैक्टीरिया से होता है। न्यूमोनिया वेरी कॉमन है, आप सबको मालूम होगा, सोसाइटी में ये चलता है। उसमें भी अगर आप ट्रीटमेंट कॉज गिनेंगे तो एंटीबायोटिक, हॉस्पिटलाइजेशन, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे तो ये शॉट जो वैक्सीन शॉट है वेरी इकोनॉमिकल इन दैट सेंस। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने से आपको डिसीज होगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस होगा, एक तो होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, और अगर होता है तो इसका सीवियरिटी कम हो जाएगा। न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन, एक तो प्रीवेनर 13 वैक्सीन आता है, वो आफ्टर 60 इयर्स एवरीबडी सिंगल डोज आता है। प्रीवेनर 13 में ऐसा है कि ओनली 13 बैक्टीरिया कवर होता है, लेकिन उसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप होता है। आफ्टर प्रीवेनर 13, everybody should have a pneumovax 23 that covers 23 variants of bacteria, and it will take a whole plethora of bacteria it will cover. So second is pneumococcal vaccine. Third is Tdap. Tdap means tetanus, diphtheria, and pertussis. Nowadays, many people are coming with this infection, और जनरली बच्चों में 10 या 12 साल की उम्र में ये डोज एक लग गया होता है, उसके बाद डोज लगता नहीं है। तो ये टीडेब इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, और इसका एक ही डोज लेना है, और बाद में उसका बूस्टर डोज एवरी 10 इयर्स, नॉट इन बिटवीन, एवरी 10 इयर्स बूस्टर डोज लेना जरूरी है। Fourth one, I would recommend human papilloma virus vaccine to prevent cancer of cervix. जनरली फीमेल में दो ही कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ये सर्वाइकल कैंसर, वेरी ज्यादा नंबर में होता है। और सर्वाइकल कैंसर का ये 100% प्रिवेंटेबल वैक्सीन अवेलेबल है। तो उसका डोज ऐसा है कि 9 इयर्स to 14 इयर्स आपको दो डोज में ये वैक्सीन लेना है, ओनली फॉर फीमेल्स, फीमेल चाइल्ड। वी कैन गिव वैक्सीन अप टू 45 इयर्स, बट अप टू 14 to 26 इयर्स उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है। आफ्टर इट इज नॉट लाइकली डेट इफेक्टिव। तो आफ्टर 14 इयर्स यू कैन यू शुड हैव अ 3 डोज। बाद में ऑप्शनल वैक्सीन में सिंगल्स जो हर्पीस जोस्टर का आता है, हिपेटाइटिस मींस जो जॉन्डिस बोलते हैं, ए टाइप है, बी टाइप है, उसका वैक्सीन होता है। टाइफॉइड वैक्सीन रेकमेंड है, बट दैट इज फॉर सम ग्रुप, नॉट फॉर ऑल। बट आई वुड रेकमेंड दिस 4 वैक्सीन टू एवरीवन: इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोनिया वैक्सीन, टीडेप वैक्सीन, एंड एचपीवी वैक्सीन। थैंक यू डॉक्टर दीपक फॉर एनलाइटिंग द ऑडियंस रिगार्डिंग जो लोग आज एडल्ट वैक्सीन वयस्क नागरिकों में जो रसीकरण टीकाकरण की जो पूरा शेड्यूल डॉक्टर दीपक ने दिया। अभी आपको कुछ ये कुछ डिफिकल्ट लगता होगा क्योंकि इसमें जो चीज़ उन्होंने बताई वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और इसलिए फेडरेशन के हिसाब से और हमारे जो दूसरे यूनिट्स हैं उनके डॉक्टर भी हम लोग आम जनता को मोटिवेट करते हैं कि ये वैक्सीन ज़रूरी है क्योंकि इट प्रिवेंट। और एक चीज़ डॉक्टर दीपक ने बहुत अच्छी बताई कि निमोनिया की वैक्सीन की कॉस्ट है और उसके सामने आप निमोनिया की ट्रीटमेंट कंसिडर करो तो वैक्सीन काफ़ी इकोनॉमिकल है। और हर एक वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है सो दैट यू कैन लीव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू कैन लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर द रिटायरमेंट। इसीलिए किसी ने कहा है कि स्वस्थ जीवन शैली स्वस्थ भविष्य। तो वैक्सीनेशन के बारे में आपके फैमिली डॉक्टर को पूछो। और हमारे फेडरेशन में हमने पूरी एक लिस्ट बनाई है दैट वी कैन सर्कुलेट टू ऑल द यूनिट्स और whomsoever it is required. Now we go to a young lady from Mumbai, Dr. Neha Shah. Dr. Neha is at present Secretary of General Practitioner Association Greater Bombay. And let me tell you, General Practitioner Association Greater Bombay is the largest unit among all the units of Federation, or it is existing then more than 54, 55 years. And
they are carrying out very regularly continuing medical education program, workshops. उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करना भी एक अहमियत होती है हमारे फैमिली डॉक्टर्स के लिए. तो डॉक्टर नेहा, in a very young age, she has become the honorary secretary of General Practitioner Association, Greater Bombay. Neha, welcome to the webinar and the discussion. नाउ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिक्स की बात नहीं हुई, तो आपसे कुछ पीडियाट्रिक के बारे में, बच्चों की बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे कि आप सी एज अ फैमिली फिजिशियन हम देखते हैं कि कई जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो छोटी छोटी बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया. तो इसके लिए भी लोग आजकल स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने लगे हैं. So do you think it is really required to go to a specialist or a super specialist for this kind of tribal illness? और दूसरी बात, ये जो डॉक्टर दीपक ने एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में बताई, वयस्क नागरिकों में टीकाकरण, तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी टीकाकरण सरकार की तरफ से अच्छी तरह से चल रही है. एंड नाउ मोस्ट ऑफ द, लेकिन कुछ लोग अभी भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है. तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? और तीसरी बात, ऐसे बताओ कि बच्चों में भी ओबेसिटी अभी आजकल देखने को मिलती है, तो ये सब चीज के बारे में हमें जानकारी दीजिए, डॉक्टर नेहा. Thank you. Thank you so much, sir. And first of all, thank you for giving me an honor to be present on this platform amongst all the great family physicians. So, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉमन इलनेस की. तो बच्चों की अगर हम कॉमन इलनेस की बात करें तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार छोटी छोटी बीमारी के लिए पीडियाट्रिशियन के पास या सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़े. एक जनरल फिजिशियन जिन्होंने एमबीबीएस किया है वो बच्चों की बेसिक बीमारियों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, उन्हें अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट दे सकते हैं. इसके दो फायदे भी मैं बता दूंगी. पहली बात होती है, फैमिली फिजिशियन को जनरली पूरा फैमिली हिस्ट्री पता होता है, क्योंकि वो बच्चे के माँ बाप, दादा दादी, घर पे जो भी मेंबर्स है ज़्यादातर फैमिली फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो फैमिली फिजिशियन ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं. और दूसरा, ऑफकोर्स हम इंडिया में है जहाँ पे कॉस्ट इज ऑलवेज अ बिग फैक्टर फॉर मेनी फैमिलीज. फैमिली फिजिशियन इज डेफिनेटली cheaper compared to a specialist. So ये दो वजह से I always recommend that अगर आप एक फैमिली फिजिशियन है जिसके पास आप खुद रेगुलरली जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं. लेकिन यस, एमबीबीएस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो मेडिसिन दिया जाता है वो एज और वेट के अप्रोप्रिएट डोजेज होता है, जो हमें एमबीबीएस में ट्रेनिंग दिया जाता है. एंड इसीलिए एमबीबीएस डॉक्टर मस्ट है फॉर अ पीडियाट्रिक पेशेंट. कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट सर रिगार्डिंग वैक्सीनेशन. सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब वैक्सीन दिए जाते हैं. इनफैक्ट बच्चों के केस में सब लेटेस्ट वैक्सीन भी इंक्लूडेड है. और जो सर ने अभी एचपीवी वैक्सीन का बात किया वो भी बहुत जल्द शेड्यूल में ऐड हो जाएगा. बहुत बार ये होता है, देखा जाता है कि बहुत पेरेंट्स शायद मना करते हैं. हो सकता है अगर उन्हें शायद गवर्नमेंट में जाने की इच्छा नहीं है तो वो हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि एज अ फैमिली फिजिशियन हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं. हमारे पास भी पूरे वैक्सीन अवेलेबल होते हैं अलॉन्ग विद द शेड्यूल. बहुत बार ये होता है कि शायद पेरेंट किसी साइड इफेक्ट की वजह से मना कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं देना है बच्चों को. तभी एज अ फैमिली फिजिशियन ये हमारा रोल है उनको एक्सप्लेन करना कि वैक्सीन का बेनिफिट कितना ज़्यादा है. और अगर हम एक बच्चे को वैक्सीन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अभी पर्ट्यूसिस हो गया या लेट्स से चिकन पॉक्स हो गया, अगर वैक्सीन नहीं दे रहे तो वो एक अनवैक्सीनेटेड बच्चा कितने सारे वैक्सीनेटेड बच्चों को भी वो बीमारी फैला सकता है. ये एक बहुत बड़ा कॉमन हेल्थ इश्यू बन सकता है, पब्लिक हेल्थ इश्यू बन सकता है. तो ये जानकारी जब हम एज अ फैमिली फिजिशियन पेरेंट को बोलेंगे तो वो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं इस बातों को. जबकि अगर कोई और जस्ट ऐसे ही बताएगा तो शायद वो इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते. बट ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है. बहुत बार जब पेशेंट इफ एंड बट में होते हैं तब एज अ फैमिली फिजिशियन अगर मैं बात करती हूँ, उन्हें कॉन्फिडेंस देती हूँ, थोड़ा एक 10-15 मिनट उनसे डिस्कशन करके उनके अगर क्वेरीज में समझती हूँ तो उनको कन्विंस करना ईजी होता है. सो एज अ फैमिली फिजिशियन ये हमारी जिम्मेदारी है to identify the kids who are not vaccinated and to get them vaccinated either at our clinic or at government operated hospital, whatever the parent is comfortable with. Coming to the third part of obesity, yes, obesity in pediatric is very rising right now, as it was discussed by Dr. Manish very rightly that आजकल processed food बहुत ज़्यादा बढ़ गया है.
सो मेरी हर एक पेरेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि बिफोर यू आर बाइंग अ पैकेट, आप एक बार सिर्फ पीछे मोड़ के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा क्या ये चीज़ देना है या नहीं देना है। दूसरा, जब हम 6 मंथ्स ऑनवर्ड सॉलिड फूड बच्चे में दे रहे हैं, जब हम उसको माँ के दूध कम करके ऊपर का पूरक पोषक आहार देना चालू कर रहे हैं, वो एक बहुत सही टाइम होता है जब आप बच्चों को गुड फूड और बैड फूड के बारे में नॉलेज देना चालू करें। एक बच्चा जिसको हम रिपीटेडली गुड एंड हेल्दी फूड ऑफर करेंगे, वो बच्चा ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड से अवे रहेगा, वो खुद सामने से हेल्दी फूड की डिमांड करेगा। इसके अलावा जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, बच्चे को पूरा घर का पोषक आहार जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट सब होना चाहिए, ना कि सिर्फ चावल खा रहा है और उसको ना वेजिटेबल्स जा रहे हैं ना कोई फॉर्म ऑफ प्रोटीन जा रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल है, पल्सेस है जैसे मूंग मुठ ये सब हो गए, ये सब आप उनको दे सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑफ कोर्स एग इज द बेस्ट प्रोटीन यू कैन ऑफर टू योर चाइल्ड। ऑल्सो अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहा है, स्पेशली इन टायर 2 टायर 3 सिटीज में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, जो भी एक कंप्लीट मील होता है जिसमें एडिक्वेटली प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर्स एंड फैट की मात्रा को दे मेक इट प्रोपोर्शनेट सो दैट चाइल्ड गेट्स एवरी न्यूट्रिशन दैट दे नीड फॉर द मील। तो वो मिड डे मील योजना जो है गवर्नमेंट की, वो भी बहुत सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में एक्टिविटी को प्रमोट कीजिए, बच्चों को खेलने के लिए उत्साहित कीजिए। घर के बाहर खेले या घर में, अगर धूप आजकल धूप का टाइम है तो दोपहर को घर में जब खेल रहे, तभी घर में ना सिर्फ मोबाइल लेके बैठे रहे बट कुछ ना कुछ फिजिकल गेम खेले। तो ये सब चीजों से हम थोड़ा एक्टिविटी को प्रमोट करें। और हमें एज अ पेरेंट, एज एन एडल्ट, हमें खुद भी हेल्दी फूड खा के वो मॉडल बना बताना है बच्चों को। अगर बच्चा देख रहा है कि मैं, मेरी मम्मी या मेरे पापा हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी फूड मांगेगा। बच्चा तभी जंक फूड आज पूछेगा ही नहीं आपको। क्योंकि अगर हम जंक फूड खाएंगे और हम बच्चे को बोलेंगे कि हेल्दी फूड खाओ, तो वो कभी नहीं होना। मैं हमेशा मेरे पेरेंट को एक बात बोलती हूँ, मंकी सी मंकी डू। बच्चा वही करेगा जो हम करेंगे। अगर हम हेल्दी खाएंगे, हम एक्टिव है, तो बच्चा भी सेम चीजें सीखेगा। सो दैट इज फॉर माई टॉक सर। Thank you. Thank you. Very well explained regarding the pediatric vaccination. और सही बताया कि पर्याप्त पोषण, तंदुरुस्त भविष्य। यस। और इससे इस साल का थीम हमारा जो है कि इंसान की क्षमता आपदा और सदमा से इसे बचाए और उसे तकलीफों से बाहर लाने का निष्ठावान प्रयत्न करे। दैट इज द थीम ऑफ this year family doctor. So I would invite in brief Dr. Subramanyam regarding the mental health, which is very important as you said rightly. Kindly elaborate regarding the mental health, Dr. Subramanyam. Thank you, sir. Well, mental health is part of the health. Let me tell the definition of health first. People think health means absence of disease, physical disease. Actually, as per WHO, the health means it is physical, mental, social, and psychological well being. Mental health is very much underestimated, undertreated, and understood by public and maybe to some extent profession also. To my knowledge, and mental health, mental illness is maybe a global epidemic, if I am right. Every second person must be going through some or the other mental disturbance. This mental disturbance can affect all ages. Earlier, we used to see only in middle age or older age. Now it is affecting younger age. Pressure, demands from society, children demand of education, too much of pressure, not much playing sports, and as our doctor said, junk food. All this gives to stress in young age, and this stress carried forward to middle age by they get into profession, family life, and they find difficult to cope with too much of demand. It is only, I can say, they have to plan properly. It is not that it is not possible, it is not planned properly. And earlier days, old age means they used to enjoy life,
thinking children would take care of the senior citizens. Scenario is changing. They have to take care of most of them themselves, their health. So stress affects senior citizens too. So nobody is free from stress. It is a question is, and in fact, this year theme is building mental resilience in changing world, means increasing one's ability to cope with stress, adversity, trauma, and bounce back from difficult situation. So public awareness on importance of mental health is very important. And gravity of situation is, I mentioned, it's a global epidemic, if I am not wrong to say that. Signs and symptoms, mental illness can present in any form. One need not behave like a mad person. Even becoming silent without responding, also we should be observed carefully. Various symptoms like getting angry, not responding properly, or disproportionate reaction, sleep disturbances, and this mental illness can affect whole physical illness and every system in the body. As our Dr. Manish said, it's a becomes a lifestyle disorder. It's a psychosomatic disorder. Psycho mind, soma means body, affects. So these mind disorders affects every system in the body. Most common system which is gets disturbed is digestive system. People come with gastric problem or acidity, bloating, lose more constipation, all these things. Whenever these symptoms do not respond for common management, we should think of mental illness. I still remember on our textbook, if you find a small ulcer in the stomach, look for a big ulcer in the brain. Our Bailey and Low textbook used to say that. So it is true even today. Then cardiac illness, respiratory illness, sleep disorders, these are all the effects of mental illness. These illnesses should be identified early and managed. Who can do this? I think ideal person to manage this is family physician. When, as our Dr. Kapadia sir, senior family physician, when people walk into our chamber, we observe them. We can read their face. We ask them, hey, why आजकल आज क्यों ऐसा है तुम्हें? सर मैं नहीं पेशेंट मैं मेरा मदर को ले मैं मदर ठीक दिख रहा है तुम्हें दिख नहीं दिख रहा है क्यों? See, that is the capacity of family physician. We have seen them from childhood growing. I think I have given my children whom I gave polygraphs are bringing their grandchildren, and I've seen their grandparents. This is the scenario with all of us, and we can pick up very early many diseases, many disorders. We ask them, आजकल क्यों तुम्हें ऐसा दिख रहा है? क्या problem है? आओ बैठो, बात करेंगे, and we understand faster. We can counsel them, we can settle them. I think all of us, we have involved in counseling. We have prevented many divorces, which many other specialists or many other agencies could not do. All of us have done that. That is the power of family physician, to understand early detection, counseling, and to some extent giving medication. I think rarely, as we grow older, longer duration in family medicine, I think a stage will come. We need hospital admission. We need specialists for only hospitalization or surgical procedures. Till that time, family physicians can manage any of the illnesses, whether it's physical illness, mental illness, and immunization, all these things. So psychosomatic disorders should be taken. Message to parents: whenever any of your family member doesn't look normal, stressed, or silent, any abnormal behavior, do not underestimate, do not neglect. Take them to your family doctor, brief them. He can definitely help to a great extent. So
Mental illness should not be taken for granted. It should be treated early. It is treatable disease. थैंक यू, थैंक यू। ऐसा कहा है कि आधी से ज्यादा बीमारी साइकोसोमेटिक होती है, and as a family experienced family physician we can very well manage. Dr. Manish, one piece of advice from you, that as you said, we have two kind of health. One is an external health and another is an inner health. So external health means मैं जो दिखता हूँ, that is my external health, लेकिन what is my inner health and what should I do, what are the basic requirement to evaluate my inner health? Kindly advise your guideline regarding the external health and the inner health. Yes, Dr. Kapadia, as you rightly said, there are two types of health. One is, मतलब हाथी के दांत एक दिखने के अलग होते हैं और एक खाने के अलग होते हैं. So तुम दिखने वाले भले ही सिर्फ दिखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टेटस है अपनी बॉडी का, दैट इज व्हाट वी शुड ले स्ट्रेस अपॉन. जो दिखता है आपने अभी अभी रिसेंटली कई पेपर्स में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि XYZ एक्सरसाइज करते हुए या जिम में एक्सरसाइज कर रहा है एंड सडनली ही कोलैप्स्ड एंड देयर वाज अ सडन कार्डियक अरेस्ट. ही इज अ रेगुलर, ही हैज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, सो कॉल्ड प्रोटीन इनटेक बराबर है, डाइट प्रॉपर है, स्ट्रेस नहीं है, देन व्हाट हैपेंड? So there are things which should be taken into consideration before deciding whether a person is really healthy from inside or not. How do we judge that? See, here is the role of a family physician. We as doctors should know who are the patients, who should be evaluated properly, who should be counseled properly, and what should be taken care of by regular checkups. इसीलिए जो इनर हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, इनर हेल्थ इज दोज थिंग्स जो कि नॉर्मली पेशेंट को नहीं मालूम पड़ता है कि उसके अंदर बॉडी में क्या चल रहा है. लाइक से फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के लेवल की अपन, कई लोग आजकल एक फैशन हो गया है, लाइक हर कोई है ना फुल बॉडी चेकअप करा लेता है और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज लिपिड प्रोफाइल्स. Patients get all the investigations done without understanding the importance of any part of it. So if you consult a proper family physician, किसी भी डॉक्टर के पास जो आपके क्लोज बाय है, जो आपके आपके नेबरहुड में रहता है, आप उनको रेगुलरली चेकअप्स के लिए दिखाएं एंड guide them, give them a family history that my father is a diabetic or my father is a hypertensive or I have a family history of a cancer. So that particular doctor would be able to judge whether you are prone to this type of diseases. So small indicators like cholesterol, या अपन यदि microalbuminuria की बात करें, that means the microalbumin content in the urine which is there, supposing there is a history of renal disease. So there are few pointers, very small pointers in the body which a family physician can take into consideration looking at your family history or looking at your lifestyle. So there are so many small things which can be taken care of, which say that the inner health of a person is important. So external health बाहर से कितने भी सुंदर हो या बाहर से कितने भी fit हो, परंतु if there is a large amount of cholesterol in your body, if your heart pumping is not proper, if you're a chronic smoker, your lungs are not healthy, though may you look healthy from outside, but inside you are not healthy. This should be assessed, and I think family physicians are the best persons to be consulted regarding this, and they'll be able to guide all those patients that आपकी inner health, internal health is not proper. Take steps so that you prevent a particular disease. Dr. Kapil. Thank you, Dr. Manish, for guiding regarding the inner health, because health checkup is very important. Now, may I request Dr. Pragnesh that do we have any questions to address the audience? So two things. Everybody talks about technology. So let me inform our audience that we family physicians are always
forefront in adapting things. Many of us are now using electronic health records and adapting newer technologies like artificial intelligence, which is the a hot thing which is coming up. But a word of caution for all this technology users and I would one thing I would like to add without being asked by you about the influence of social media in making health decisions. There are so-called lots of social media influencers going around with imparting so much of knowledge that drink this red tea, green tea, blue tea, whatever, and these are the benefits, and these are the foods, and these are the various diets available in the market. Take it with a pinch of salt. Look for the credentials of the person who is talking about health. Is there he or she has any official credential, any authority to talk on this subject? That is most important because in this commercial world we can get easily fooled by the number of followers, number of shares, number of likes, this and that, because everything is is manageable task. So my humble request, before trying anything which is miraculous, which your doctor doesn't know about, any therapy that is happening in the world, be careful of taking the treatment. Thank you. Do we have any time for any more questions to take, or should we conclude? I think we can take a couple of them and then conclude. Okay. Can you enumerate few questions if you have from the chat box? Sir, I'll just go one by one. Yes, Neha. First, by Dr. Vinod Shah, talking about that we have very poor laws to take action on quacks. And Dr. Suresh Chatwani saying quackery age-old problem. This is in regards to Dr. Pragnesh Vacharajani talking regarding the quacks taking over. So if you would like to say anything here. As he had rightly said, it is a very old problem. And all diseases are difficult to cure. Yeah, we are trying our best at every unit. Okay. For Dr. Manish Jain, there is a question that what is the best medicine for hypertension? This is being asked by Mukta Jain. So I think you can just keep a brief about a minute of answer on this. Okay, the best medicine for hypertension. Lifestyle. Lifestyle. Very, Individualized. yes, very common question. Patient कभी आता है और supposing he is on amlovas 5, right? And आपने देखा और आपने उसको telmisartan 40 मिलीग्राम लिख दिया. ओह, आपने 5 मिलीग्राम को 40 मिलीग्राम कर दिया. ये तो बहुत गर्म गोली होगी, ये तो बहुत भारी होगी गोली. So this is a very common misconception amongst everybody. See, we don't have Patanjali kind of things where there is one single medicine for hypertension, one single medicine for diabetes. Sorry. Hey, go ahead. Oh, so in allopathy, there is no one single medicine which is the best. Depending upon the patient, depending upon the problems or the comorbid conditions like diabetes or associated with obesity or all other renal complications, the medicine has to be adjusted according to that comorbidity and the level of your blood pressure. So there is no single best medicine. All medicines are good, but for a particular person. Yes, sir. What I told my patient is as long as the number is not printed along with Gandhi Bapu's photo, don't worry about the number. Okay. Yes. Dr. Subhash Gajaria saying vaccination should be administered by family doctor as he is having best knowledge of patient history and allergy. Yes, sir. We all agree to that for sure. Dr. Vinod C. Shah is saying that my question to you introducing use of AI and telemedicine in family practice. Dr. Pragnesh, can you enlighten us on this? During the time of COVID, we all were doing informal teleconsultations before, but COVID has taught us to make it in a more uniform way. And I think all the family physicians have very well embraced this new change, and the patients also. Society is also was very receptive in accepting this change. So this has become a new normal. Teleconsultation has become a new normal for all the family physicians as well now. Okay. Yes, there are no more I think questions from the public. this should be the last question, and then we should be concluding. Yes, sir.
There are no other questions, sir. Okay. Kapadia sir, all yours. Okay. Yes. Thank you, all my very learned family physicians from Indore, from Bangalore, from Surat, Ahmedabad, and Mumbai. See, today it was a very important day for family physicians. And to celebrate the World Family Doctors Day, we have organized this very important webinar for the general public so that they can take as a pinch of salt that what are the very important aspect of our health. And we talked about, first of all, we talked about the misconception, myths prevailing in the society. Dr. Manish very well evaluated regarding the lifestyle disease, how to prevent it and take care of your health. Then Dr. Pragnesh enumerated the liaison between the government and the different scheme and the lawmakers, how the family physicians should be involved in different scheme. Dr. Deepak very well narrated about the importance of adult vaccination, when we should take it, what are the benefits, what are the side effects, very important thing. And Dr. Neha, in a nutshell, she enumerated about the pediatric vaccination, about the nutrition and health, regarding the misconception, because pediatric practice is based on the patient weight and the age. So very, very minute points, but very important points for the audience as a whole. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ से रुकने वाले नहीं हैं. This is going to go ahead. This is just a beginning, because we said, it is very rightly said that it once you first milestone of a family physician or the federation side regarding this webinar for the public. And now, as Dr. Pragnesh said, we are going to go ahead with on a hypertension day, diabetes day. We are going to have this kind of webinar for general public. And if you have any suggestion, kindly write down to the Federation office. We shall post the address of the official address of the Federation. And thank you all my panelists. Thank you viewers for joining for a very important panel discussion regarding, as you said, family physician, lifeline of the health. Thank you very Thank much, you. and good Thank night. you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, so much. Kapadia sir, Thank you for all the nicely viewers as moderating well. this session. See, 5 important key points take away from here is every child for a small illness doesn't need a pediatrician consultation. Vaccination for adults is a new normal. All the adults talk to your family physician which vaccines are essential for you. Mental health is the new disease. Good mental health is required for everything, and your friend, philosopher, and guide and family physician can definitely help. We are dealing with the tsunami of lifestyle diseases, and the lifestyle diseases need a good captain, a good soldier like a family physician who will help you to the going through this turmoil. And five, we at FFBI are always at the forefront in educating public and talking to the authorities about, and we are there, and we strongly believe that not whatever the numbers as of now, we may be less in number, but the next future is of ours. Thank you. Thank you very much for everyone for joining. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Right. Thank you. Good night.